students, myself Deepika Dhanwani, welcome heartily by all of the students on behalf of Ideal Institute of Commerce and Genius School of Commerce. Regarding the 12th Standard Commerce, before classes we studied the chapter number 1st, the Introduction of Partnership Firm, in which we discussed the basic meaning of partnership, the characteristics of partnership, what is the meaning of partnership deed, what are the main contents which included into the partnership deed, what are the basic rules or principle applicable in the absence of partnership deed, and about the capital account of the partners and the method of maintaining the capital account of the partners in the partnership firm. If you all remember, in previous lectures we discussed or covered all these topics. Today we are taking the topic. The major topic is profit and loss appropriation account. Here's profit and loss appropriation account is the part of the profit and loss account. In 11th standard, you studied about the final account of any organization like preparing of manufacturing account, trading account, profit and loss account, and balance sheet account. Similarly, similar to the sole ownership, the partnership firm also maintain such accounts. So the profit and loss appropriation account is the part of the P&L account. इसे एक पार्ट के रूप में ही कंसीडर करते हैं और द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट. P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है या और विस्तृत रूप है. The second, the major important point to distribute the profit and losses among the partner. Profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit or the loss of the partnership firm among the partner. पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस होता है फाइनली पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये डिस्कस हम पार्टनरशिप डीड में भी कर चुके थे कि पार्टनरशिप फर्म एक प्रॉफिट मोटो से काम करती है, एक बिजनेस पर्पस से काम करती है और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो अपने प्री डिटरमाइंड रेशियो में जो उन्होंने डिसाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. द थर्ड मेजर पॉइंट, prepared after the preparation of profit and loss account. प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा. Here one question arises by the examiner, what do you mean by the profit and loss appropriation account? So your answer will be in one liner, to distribute the profit and loss among the partners, the profit and loss appropriation account is prepared. And the other major content you can say it is the part of the profit and loss account. It is prepared after the preparation of profit and loss account and it consists the nature of nominal. Nominal nature होता है क्योंकि expenses और incomes के बारे में बात करता है partners की. Here is the format of profit and loss appropriation account. Firstly, to profit and loss account, if there is loss arises in P&L account, loss should be mentioned. If there is the profit should be mentioned. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कैरी हो जाएगा, लॉस हुआ है तो लॉस कैरी हो जाएगा. डेबिट एज पर द नेचर ऑफ नॉमिनल, डेबिट सारे एक्सपेंसेस कंसीडर करता है. सिमिलरली पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट फर्म दे रही है ऑन देयर कैपिटल वो मेंशन होगा. पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म उन्हें इंटरेस्ट देगी, वो मेंशन होगा. पार्टनर्स की सैलरी, बोनस, कमीशन मेंशन होगा डेबिट साइड में. कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर कोई रिजर्व मेंटेन कर रही है तो उसका परसेंटेज यहाँ पर शो किया जाएगा. और ऑन द हैंड ऑफ क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन पार्टनर, फर्म पार्टनर्स पे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रही है, रिसीव कर रही है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस पे. अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो फर्म उस पे इंटरेस्ट देगी, इसलिए डेबिट साइड. और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म. और उसके बाद
जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में हम फाइनली we calculate the profit or loss. Similarly, in the P&L appropriation account, we also calculated by charging after all these items the profit or the loss. Either it gave the profit or gave the loss. These profit or loss can be say a divisible profit and divisible loss which is distributed among the partners in their predetermined ratio. Profit आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. Got it? Here one major topic or major point you can say you should be remembered. Interest on partners loan. अगर पार्टनर के लोन पे कोई भी इंटरेस्ट है और मैनेजर का कमीशन है, वो दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर होंगे. प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंसीडर नहीं किए जाएंगे. गॉट इट? यहाँ पे एक कमीशन वर्ड लिखा गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द पार्टनर्स कमीशन, नॉट द मैनेजर कमीशन. सो यू शुड हैव टू रिमेंबर द इंटरेस्ट इन पार्टनर्स loan and the manager commission is recorded in profit and loss account, not in the profit and loss appropriation account. So after sum up, if there is question arises regarding the write a short note on profit and loss appropriation account, so your answer will be considered in the following points. First, it is the part of profit and loss account. Profit and loss appropriation account is prepared to distribute the profit and loss among the partners. It is prepared after the preparation of profit and loss account. It consists the nominal nature, the format of profit and loss appropriation account, and here the major important point, the interest on partners loan and the manager commission is recorded into the debit side of the profit and loss account, not in the profit and loss appropriation account. Got it? Now we will have to take you can say each important content from the profit and loss appropriation account to understand the whole format and for our practice questions. Firstly, I took the calculation of interest on drawing. How we calculate the interest on drawing. Got it? Here the major 2 points are included. The basic formula of drawing, the drawing into rate into time period. Now how you can apply the time period? Here the 2 major points are included. If drawing is done in the beginning of every month, कोई भी पार्टनर अगर हर महीने की पहली तारीख को बिगनिंग पीरियड में अगर विड्रॉ करता है, सो द टाइम पीरियड जो लगेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 78/12. If drawing is done in the end of the every month, the interest will be calculated for 66 months, means 66/12. Got it? The practice questions is also attached in your PDF file. You can see or watch the solutions or the practice question for your practice. The next, the calculation of commission of partner. The second major topic I took from the P&L appropriation account. The calculation of commission of partner. Here there is the major distribution of, you can say it can be divided into the 2 parts for understanding the students. If commission is to be paid on profit before deduction of such commission, please mention here the word before and here after. It is a 2 important point. By through you can easily remember the formula of the commission of calculation of partners. If commission is to be paid on profit before deduction of such commission, the computation of commission will be the net profit into percentage of commission. And if commission is payable from profit after deduction of such commission, the computation of commission will be done net profit into percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. So you are watching the before word, the formula will be applied here, and regarding the after word, the formula will be here. Got it? Thank you.